Hello and welcome back to Shorthand Pro. I'm John. I hope you all are fine. I welcome all of you in my live class today where I'll provide you three dictations. One dictation is a general matter dictation as you can see on screen. It is for Stenotypist post. Its speed will be 60 words per minute. The second dictation for today is a mixed matter dictation. Its speed will be 70 words per minute. Very important one. It will be given for junior scale stenographer. The third dictation for today is a legal matter dictation comprising of 408 words. Its speed will be 80 words per minute. It will be given for senior scale stenographer. Along with these dictations, I'll share with you some outlines of these dictations tomorrow. So if you are new to my channel, please subscribe the channel and visit there, as you will see a lot of playlists created there and can avail the benefits of our channel. ठीक है? तो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द डिक्टेशन. डिक्टेशन में बहुत सारे ऐसे नए वर्ड्स हैं जिनको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रैक्टिस करना है. ठीक है? सो प्लीज डोंट टेक दिस डिक्टेशन फॉर ग्रांटेड. Get yourself ready for the dictation straight away. The dictation will start after 5 seconds. Start. In recent years, the world has been confronted with concepts that once seemed distant or theoretical, yet now dominate contemporary discourse. Stop. The notion of a permacrisis aptly describes a prolonged state of instability, in which societies appear to lurch from one difficulty to another without meaningful respite. Stop. This sense of unending turbulence is compounded by the rise of polycrisis, wherein multiple global challenges, climate change, geopolitical tensions, economic fragility, and technological disruption interact in ways that amplify their individual impacts. Stop. The result is a feeling of collective vulnerability and a recognition that modern systems are deeply interlinked. Stop. Amidst this context, the metaverse has emerged as both an opportunity and a risk. Stop. On one hand, it offers unprecedented possibilities for virtual collaboration, commerce, and cultural exchange. Stop. On the other, it raises profound questions about regulation, privacy, social isolation, and the concentration of power within the hands of a few dominant corporations. Stop. The digital environment, while seemingly boundless, may inadvertently intensify divisions in the physical world if left unchecked. Stop. Parallel to these technological shifts is the
pressing imperative of decarbonization, which demands not merely policy declarations but tangible, systemic change. Transitioning to clean energy, reducing industrial emissions, and rethinking consumption patterns are not optional gestures, they are essential undertakings if humanity is to avert catastrophic climate outcomes. Yet, the very urgency of this agenda often collides with political inertia and economic self-interest, leaving implementation uneven across nations. Finally, the era has also been shaped by an infodemic, deluge of misleading or false information, spread with alarming speed through digital networks. This phenomenon complicates responses to crisis, as public trust is eroded and sound decision making undermined. In such an environment, discerning truth from distortion becomes as vital a skill as scientific literacy. Together, these intertwined themes illustrate the fragile, multifaceted challenges of our age. End of dictation. आई होप डिक्टेशन आप सबको अच्छी लगी होगी। डिक्टेशन में काफी सारे नए वर्ड्स हैं, उनकी आउटलाइन आपको कल मिल जाएगा शॉर्ट्स में, ठीक है। तो चैनल पे आप एक्टिव रहिएगा। तो if you are ready to write down the second dictation for today, please mention in comments so that we can start our second dictation. तो जो हमारी दूसरी डिक्टेशन आज की है ये का मिक्स्ड मैटर डिक्टेशन है। एग्जैक्टली इसी तरह आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट डिक्टेशन प्रोवाइड करेगा जिस पैटर्न में ये डिक्टेशन बनी हुई है, इन ऑर्डर टू ड्रॉप यू आउट, ठीक है। जैसे कि कंपटीशन बहुत सारा है, टफ डिक्टेशन जैसे आती है उसी पैटर्न के हिसाब से आपको ये डिक्टेशन देखने को मिल जाएगा। सो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन राइटिंग डाउन दिस डिक्टेशन पर्टिकुलरली, ठीक है। इस डिक्टेशन में ये कंफ्यूजिंग डिक्टेशन है, आपको कंफ्यूज करेगा। सो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसको लिखना है, अगर कुछ छूट जाता है तो छूटने दो, लेकिन बाकी डिक्टेशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे सारे, ठीक है। ये डिक्टेशन 353 आपका वर्ड्स होगा। मैं कोशिश करूंगा इसकी स्पीड 70 से कम रखने की, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 5 मिनट से ज्यादा इसमें लगेगा टाइम, ठीक है। आपके लिए मैं थोड़ा स्पीड कम करूंगा, अदरवाइज आई हैव टू डिक्टेट इट एट 70 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। सो please prepare yourself for the dictation. The dictation will start after 5 seconds. Start. Pursuant to prevailing principles of procedural jurisprudence, the present petition pertains to a predicament precipitated by the parties' prior pact. The petitioner postulates that performance obligations were improperly perceived, prompting persistent prejudice. The presiding judge, possessing prudential powers, proceeded to ponder preliminary pleas
presented by the opposing party. Stop. India is witnessing significant developments across various sectors. Stop. On September 27, Prime Minister Narendra Modi inaugurated over 60,000 crore worth of infrastructure projects in Odisha, highlighting the nation's advancement in indigenous technology and its position among the top 5 globally. Stop. In the realm of transportation, the Amrit Bharat Express was launched, enhancing rail connectivity between Chhattisgarh, Odisha, and Gujarat. Stop. The supporting landscape is also vibrant, with India hosting its first ever World Para Athletics Championships in New Delhi, showcasing the nation's commitment to inclusivity in sports. Stop. However, the country faced challenges as Kolkata experienced a severe cloudburst on September 23, resulting in flash floods that caused 12 fatalities and significant disruptions. Stop. These events underscore India's dynamic progress and resilience amidst challenges. Stop. The plea challenged the petitioners' passive participation during prior proceedings, positing that such passivity precludes entitlement to relief. Stop. Moreover, the plaintiff propounded propositions premised upon prima facie evidence purporting to prove practices perpetrated by the defendant. Stop. Pending these propositions, the court permitted provisional protection measures to prevent potential prejudice. Stop. Parallel proceedings in a proximate jurisdiction were presented, producing pertinent precedents. Stop. The presiding bench perceived these as persuasive, reinforcing the petitioner's position. Stop. Prudence demanded scrutiny to preclude procedural impropriety. Stop. Each paragraph of the petition was parsed, with emphasis on procedural propriety, presentation of pertinent documentation, and adherence to statutory prescriptions. Stop. The prosecution presented arguments, portraying the petitioner's claims as potentially prejudicial and procedurally problematic. Stop. Per contra, the plaintiff petitioned for protective prerogatives, insisting upon postponement of proceedings pending proper presentation of supplementary proof. Stop. Primarily, the judgment prioritized principles of proportionality, procedural fairness, and predictable precedent. Stop. It pronounced that parties must participate punctiliously, present particulars without procrastination, and preserve propriety at all stages. Stop. Pending further proceedings, the court emphasized prompt compliance, persistent engagement, and prudential preservation of rights, aiming to protect
procedural integrity, comma, promote predictability in jurisprudence. Stop. End of dictation. आई होप डिक्टेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने ये डिक्टेशन लिख ली, इसमें कम गलतियां कर लिया, तो मेरे फोन से लिख के ले लेना, अपने स्टेनोग्राफर का पोस्ट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो कंफ्यूजिंग डिक्टेशन होती है ना, इसी तरीके की डिक्टेशन आ जाती है एग्जाम हॉल्स में, ठीक है। तो इन डिक्टेशन को आप रिपीटेडली प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे डिक्टेशन अपलोड हो जाएगी तो फिर रिपीटेडली प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें जितने भी टफ वर्ड्स हैं उनकी आउटलाइन मैंने बना के रखी है, आपको मिल जाएगा कल मॉर्निंग में, ठीक है। ये बहुत टफ डिक्टेशन है, बहुत ज्यादा टफ डिक्टेशन है। जो आप में से सीनियर स्केल की डिक्टेशन लिख लेता है 90 वर्ड्स की, 100 वर्ड्स की, वो ऐसी डिक्टेशन अगर लिख लेगा, इस डिक्टेशन में अगर उसने कम गलतियां, एरर कमेंट्स की है, तो मेरे खून से लिख के ले लो कि वो क्वालिफाई कर देगा, ठीक है। तो ऐसी डिक्टेशन आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। ये डिक्टेशन को बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और इनमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनी हुई होती है ऐसी डिक्टेशन लिखने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, आपको पता है कंपटीशन बहुत हाई है। वो डिक्टेशन अगर टफ देगा तो टफ देने के साथ साथ वो एक स्मार्ट डिक्टेशन देगा। तो ऐसी डिक्टेशन स्मार्ट होती है, ठीक है। तो इन्हीं स्मार्ट डिक्टेशन में आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत सारा है, आपको compete करना पड़ेगा, कितने ही पोस्ट है। Okay, now if you are ready to write down our last dictation, so please tell me in comments so that we can start our last dictation. Okay. जो अब लास्ट डिक्टेशन है, ये एक लीगल मैटर डिक्टेशन है 408 वर्ड्स का। इसकी स्पीड में रखूंगा एग्जैक्टली 80 वर्ड्स पर मिनट। ये ज्यादा टफ नहीं है, बट 80 वर्ड्स की रहेगी, तो तैयार रहिए इसके लिए, ठीक है। ओके, गेट योरसेल्फ रेडी फॉर द डिक्टेशन। The dictation will start after 5 seconds. Start. Heard, learned counsel for the parties stop the petitioner, comma, through the medium of this writ petition filed under Article 226 of the Constitution of India, comma, seeks a writ of certiorari for quashing order number 15 PSA of 2024 dated 15/3/2024, comma, issued by the district magistrate, comma, Srinagar, within brackets respondent number 2, comma, whereby the petitioner has been placed in preventive detention, stop. Concomitantly, comma, a writ of habeas corpus is sought, comma, directing the respondents to produce the detainee before this court and set him at liberty forthwith, stop. The primary ground assailed by the learned counsel for the petitioner is the blatant non-application of mind by the detaining authority, comma, it is contended that the grounds of detention, comma, which form the foundation for the impugned order, comma, are vague, comma, non-existent, comma, and devoid of material particulars, stop. The petitioner asserts that he was not supplied with the complete dossier of documents relied upon by the respondents, comma, thereby crippling his constitutional right to make an effective representation against the detention order, comma, a right guaranteed under Article 22(5) of the Constitution of India, stop. It is further argued that there has been an inordinate and
unexplained delay in considering the petitioner's representation by the government, rendering the continued detention illegal. Stop. Per contra, learned additional advocate general, appearing on behalf of the respondents, has defended the impugned order. Stop. He has submitted that the detention order was passed after due satisfaction by the detaining authority based on a sound dossier provided by the sponsoring agency. Stop. He contends that all statutory procedural safeguards were meticulously followed, and the petitioner was informed of his right to make a representation. Stop. We have considered the rival submissions and perused the material on record, including the detention record produced by the respondents. Stop. Upon a scrutiny of the detention record, it is manifest that the copies of certain documents, specifically the translated version of one intelligence report and the statement of a confidential witness referred to in the grounds of detention, were not supplied to the petitioner. Stop. The non-supply of these vital documents has patently prevented the petitioner from making an effective representation. Stop. This failure on the part of the respondents constitutes a fatal flaw, vitiating the entire detention process. Stop. The right to make a representation is not a mere formality but a substantive constitutional right, the breach of which cannot be countenanced, stop. Consequently, for the reasons stated herein above, the writ petition is allowed. Stop. The impugned detention order number 15 PSA of 2024 dated 15/3/2024, issued by respondent number 2 is cautioned. Stop. End of dictation. I hope dictation आपको अच्छी लगी होगी. Now I'll give you 5 minutes to ask me any question you want to ask. ठीक है, आपके पास 5 मिनट है कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, पूछ लीजिए. हाँ, thank you so much मीर जी, thank you so much for your good comment. हाँ सकलेन जी, very beautiful. हाँ, thank you so much सकलेन जी, thank you so much. If you have any question, please ask me in comments so that I can answer your questions and I can clear your doubts if you have anything in your mind. और आप सबको पता है कि एसएसबी ने एडवर्टाइजमेंट अब निकाली है, तो उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा. बस याद रखिएगा, उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारे हाई कोर्ट के एग्जाम्स पे. उसके बाद हम एसएसबी पे अलग स्ट्रेटजी क्या होगी, एसएसबी की पूरी एडवर्टाइजमेंट को और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे कैसे डिक्टेशन हमें लेने हैं और देने हैं, वो सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है हाई कोर्ट का एग्जाम. ठीक है, हाई कोर्ट का एग्जाम कंडक्ट कर लो, अपियर हो जाओ उसमें. उसके बाद जो हमारा एसएसबी का एग्जाम है, उसके लिए मैं आपको इतनी अच्छी बड़ी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आप हमेशा याद करोगे. उसके लिए मैं इतना अच्छा इम्पोर्टेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. और उसमें हमें सिर्फ डिक्टेशंस नहीं लेने, उसमें हमें पूरी स्ट्रेटजी बनानी है. जो हमारे उसमें 3 टायर्स होते हैं, तीनों टायर्स के लिए आपके लिए मैं एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के ले आऊंगा. फिलहाल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू पे कंसंट्रेशन ऑन
हाई कोर्ट एग्जाम, आपके दिमाग में एक बैकअप खड़ा हुआ होगा एसएसबी के एडवर्टाइजमेंट को लेके, उसको मत रखो दिमाग में। फिलहाल पहले कॉन्सेंट्रेट करो जो आपने फॉर्म भरा है, जिसके लिए आपको एग्जाम देना है जल्दी, उसके लिए, ठीक है। बाकी एसएसबी को बाद में देख लेंगे हम। इज देयर एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी? अजान का टाइम हुआ है, नमाज के टाइम हो रहा है, तो आप प्लीज जल्दी मुझे क्वेश्चन बता दीजिए, कोई क्वेश्चन अगर होगा तो। अदरवाइज आई हैव नो ऑप्शन टू कंक्लूड द मीटिंग नाउ। हाँ, थैंक यू, कोई बात नहीं सकलेन जी, मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूंगा। आप चैनल पे बने रहिए और प्लीज अगर हो सके तो चैनल को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि डिक्टेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग फॉर माय डिक्टेशंस व्हिच आई एम प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आई वांट ओनली जस्ट लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते फी पे करना, हजार हजार रुपए पर मंथ, तो उनको शेयर करो, फ्री में मिल जाएगा, उनका फायदा हो जाएगा, तो आपका भी फायदा है उसमें। माही मुश्ताक जी पूछ रही है, आई अप्रिशिएट योर क्रिएटिविटी, थैंक यू सो मच माही जी, थैंक यू सो मच। एचएम ब्राइडल पूछ रहा है, थैंक यू सो मच सर। हाँ, थैंक यू सो मच टू यू टू। आप चैनल से बने रहिए, आपको आप देखोगे खुद आप कितना इंप्रूव करेंगे हमारे चैनल से। नजर अहमद गनाई जी पूछ रहे, सर मैं पूरी डिक्टेशन लिख नहीं पाती हूँ, प्लीज हेल्प। तो उसके लिए आपको, आपकी स्पीड कम है, आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है डिक्टेशन। आप कंसंट्रेटली आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग करके, वो रिकॉर्डेड वाला प्लेलिस्ट जाइए जहाँ पे 49 वीडियोस है, उनकी आप प्रैक्टिस करिए दिन में 2-2 3-3, आपको उन्हीं से स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि उनमें वैसी ही पैटर्न की डिक्टेशन प्रोवाइड कर दी जा गई है। आउटलाइन भी बनी हुई है उसमें, तो वहां से आपको फायदा मिलेगा। और इन डिक्टेशंस का आउटलाइन आपको कल सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है। सो बी एक्टिव इन चैनल, ठीक है। यहाँ पे शर्मा जी पूछ रहे हैं, यस सर योर वीडियोस वर वेरी वेरी हेल्पफुल मी, ठीक है। यानी कि इसके लिए कह रहे हैं कि हमारे आपकी वीडियोस काफी हेल्पफुल है हमारे लिए। हाँ, थैंक यू सो मच शर्मा जी, मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूंगा टिल माय लास्ट ब्रेथ। बस आप कंसिस्टेंटली के साथ ये देखते रहिए डिक्टेशन जो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। और हाँ, मैं नहीं कहूंगा सिर्फ आपको मेरी ही डिक्टेशन फॉलो करने हैं, नहीं, फॉलो उसका कर लो जो बेस्ट होगा, और लिखो सबका, जो भी दे रहा है लिखो सबका, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मैनेज योर पेइंग्स, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि आप अफोर्ड कर पाओगे उतना पैसा, ठीक है। अगर फ्री में मिल रहा है तो फ्री का फायदा उठा लो, ऐसा नहीं है कि आप इनको फॉर ग्रांटेड ले लो। फ्री है बट इफेक्टिव है, ठीक है। पैसे आपको नहीं पे करने पड़ रहे, बट फायदा बहुत हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, हमें भी फायदा दे दीजिए शेयर करके अपने दोस्तों के साथ। शेयर करना है, वीडियोस को लाइक करना है, एक छोटी सी कमेंट करके। बाकी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई विल कीप गाइडिंग यू टिल माय लास्ट ब्रेथ एवरीवन, एंड यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, प्लीज मैसेज मी और through my videos, or you can just join yourself by uh, clicking the link which is on the description of this video। वहां से टेलीग्राम में आप ज्वाइन करके आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। Okay, thank you so much, all the very best for your future। I wish you a great success this time and have a great future ahead। Thank you so much, thank you for your love and support।